Good morning to all of you. So in today's class, I am going to revise the chapter electricity as we have finished this chapter. And in your PT2, 3 chapters are coming. That is light reflection and refraction. Second chapter is human eye and colorful world, and third chapter is this electricity. The light chapter, reflection and refraction, as I have already done the revision because it was in the PT1 syllabus also, and all the video is available on my YouTube channel. I will resend that video once again. And the human eye and colorful world till defects of vision, I have revised that chapter. Okay, so today we will revise the chapter electricity, and after that I will revise the leftover part of the human eye and colorful world in my next video lecture. Please go through it, study well, and secure good marks in PT2 exam. So electricity, in that the first topic which we are dealing with, that electric potential. I will only give the overview of the chapter, what we have studied, and potential difference. Okay, so we have talked very first that what is the meaning of electric potential and potential difference. In the electric potential, we have talked that the work done in bringing a charged particle, unit positive test charge, from infinite to a point inside the electric field. Work done in bringing a unit positive test charge from infinite to a point inside the electric field, that is electric potential. And the formula we have said that V is equal to W upon Q, and the unit for that is joule per coulomb, or we can say that electric potential is measured in volt. Okay, we have seen about this, about the electric potential. Electric potential is the capacity. What is electric potential? Electric potential is the capacity. After that, we have talked about the potential difference, that work done in moving a charged particle from one point to another point inside the electric field. Work done in moving a charged particle from one point to another point inside the electric field. So suppose we have a wire, and one end of the wire has the potential VA, and the other end of the wire has the potential VB. So what will be the potential difference? It will be VA minus VB. That will be potential difference. And what is potential difference? Work done in moving a charged particle from one point to another point inside the electric field. And its unit is also same as the unit of electric potential. Its unit is also volt. Okay. After that, we have talked about electric current. And in the electric current, we have talked about rate of flow of charge. What we have talked about in the electric current, we have talked about rate of flow of charge. And this rate of flow of charge is said to be electric current. And electric current, the symbol for the electric current is I. So what is the formula for electric current? I is equal to Q upon T. And the unit of current will be coulomb per second, or we said that it is in SI unit is ampere. What is SI unit? Ampere. So if we have to define 1 ampere, so what will be 1 ampere? 1 coulomb upon 1 second. If 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 ampere. Okay. So, but what is current? It is flow of charge, flow of electron. Okay. And that was, I am saying, that electron will flow if there will be what? Potential difference. If there will be what? Potential difference. So that's why we say that let this point be A, this point be B. So here we can say that V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. If the potential difference will be more,
current will be more. If the potential difference will be less, current will be less, because if the potential will be there, potential difference will be there, then there will be flow of electron. A flow of electron is responsible for the conduction of current. So if there will be more potential difference, then more number of electron will flow. If there will be less potential difference, less number of electron will be flow. And if there will be no potential difference, no electron will flow. Okay. So if we will say that if this wire is at point A also and at point B also, if the potential will be same, so what will be the potential difference? Potential difference will be 0. Then the current will not flow through it. So according to Ohm's law, what is Ohm's law? According to Ohm's law, which is very much important topics, Ohm's law, if the physical condition remains same, if the physical remain is unchanged, then the potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing in the conductor. So according to Ohm's law, what is that? If the physical condition will remain same, then potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing in the conductor, that is V directly proportional to I, or V is equal to Ri. And what is your R? R is our proportionality constant, which is known as resistance. What is our proportionality constant, which is known as resistance? And what does resistance do? It opposes the flow of current. What does resistance do? It opposes the flow of current. The work of the resistance in the current is same as the work of the friction in the motion. The work of the resistance in the current is same as the work of the friction in the motion. So resistance opposes the flow of current, and resistance depends on length of the conductor, and resistance depends on area of cross section. So I will not go in much detail. Okay, I will give you only the overview. If you want in much detail, so you see my all video lecture of the chapter electricity. So if length will increase, what will happen? Resistance will also increase. But if area of cross section will increase, resistance will decrease. So that's why we say that R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. That are the factors affecting resistance of a conductor. Resistance of a conductor. So these are the factors which are affecting resistance of the conductor. R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. And third is our resistance depends on temperature and nature of the material. It depends on temperature and nature of the material. If we combine both, what we will get? R is directly proportional to L upon A, or R is equal to rho L upon A. Again here rho is what? Proportionality constant, that is said to be specific resistance or resistivity. And this is the intrinsic property of the material, and resistivity depends on temperature and nature. Only this thing, nature of the material. It doesn't depend on length and area of cross section. So, and the unit of resistance is, resistance unit is ohm. Symbol is this. And the unit of resistivity is, ohm meter. What is the unit of resistivity? The unit of resistivity is ohm meter. So the unit of resistivity is our ohm meter. Okay. Now, after that, we have talked about combination of resistances. First in series and second in parallel. What we have talked that in series, if two and more resistance are connected in series, so what will be their equivalent resistance? That will be R1 plus R2. And if they are connected in parallel, what will be their equivalent resistance? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. That is 1 by R P is equal to R1 R2 R1 plus R2, or R parallel is equal to R1 R2 upon R1 plus
R2। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में वायर को रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और पैरेलल में हम लोग अगर वायर को कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से जो हाउस होल्ड सर्किटिंग होती है उसमें हम लोग किसका कनेक्शन करते हैं, वी विल डू व्हाट वी डू, पैरेलल कनेक्शन। एंड देयर इज मच एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, दैट इन पैरेलल देयर इज सेपरेट स्विचेस फॉर ऑल द appliances, but in series there is only single switch for all the appliances. Second, in parallel, what is happening in the case of parallel, our current get divides. What is happening in the case of parallel? In the case of parallel the current get divides, but in the case of parallel voltage remains same. Parallel में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में क्या सेम नहीं रहता है, वोल्टेज सेम नहीं रहता है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है कि वोल्टेज सेम नहीं रहता है। ओके, थर्ड थिंग्स कि अगर सीरीज में एक जो हम लोग का है, सिंस एक बल्ब भी अगर जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इक्विपमेंट फ्यूज हो जाएगा, तो ऑल द अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग, जबकि ये चीज हम लोग का पैरेलल में नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स, ओके, बट इन द केस ऑफ पैरेलल current get divides. So that is about the resistance connected in series and parallel. After that we have talked about the electrical power. That is, we know that V is equal to W upon Q. हम लोग क्या जानते हैं, V is equal to our W upon Q. और अगर यहां से हम लोग पावर को देखें तो अगर हम लोग को पावर को डिफाइन करना पड़ेगा तो हम लोग एक जानते हैं कि V is equal to W upon Q. एक फैक्टर्स तो हम लोग को मिल गया कि V को हम लोग क्या जानते हैं, V की वैल्यू हम लोग की जो होती है वो W upon Q के बराबर होती है। दैट इज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V is equal to work done upon charge, work done in bringing a charge particle from infinite to a point inside the electric field. ओके, तो ये फैक्टर्स हम लोग जानते हैं। इस फैक्टर्स को ऊपर हमने प्रूफ कराया था, P इक्वल टू V इंटू आई। V इंटू क्या हमने प्रूफ कराया था, V इक्वल टू Q इंटू P इक्वल टू V इंटू आई। पावर को हमने क्या प्रूफ कराया था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। यहां से हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q, और हम लोग जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, तो W इक्वल टू V इंटू आई इंटू हम लोग का T हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग के बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं, आगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, वो प्रूफ हो जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे हम लोग का क्या है, फैक्टर्स हम लोग देख चुके हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज P इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और W को क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q अपॉन T। तो यहां से Q अपॉन T को क्या लिख सकते हैं, I। इसी से हम लोग का ये फॉर्मूला आया P इक्वल टू V इंटू आई। फॉर्मूला क्या दिया, P इक्वल टू V इंटू आई। और वहां से हम लोग सिंस जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ओके, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो V इक्वल टू हम लोग का आई आर हो गया, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया, तो यहां से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया, यहां से हम लोग को V के जगह हम लोग आई स्क्वायर आर मिल गया। ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया। एक पावर का फॉर्मूला और क्या होगा कि अगर I के जगह हम लोग रख देते हैं V अपॉन आर, तो दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इफ अ वायर इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सो अगर जो करंट फ्लो होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, जो करंट उसमें फ्लो होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, और जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। दैट फैक्टर इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके ऊपर आयरन वगैरह हम लोग क्या करता है, वर्क करता है, और उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या किए थे, इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ किए थे, दैट इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग
ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं और यहाँ से पढ़े थे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. That's all about the chapter. Thank you. God bless.